Okay. Just a second, students. Alright, so hi, hello, good evening, my dear students. This is Ritika, your chemistry educator, and I welcome you all to the very amazing platform Unacademy. So today we are going to start with a very important topic, that is chemical bonding, and let's see what are we going to learn in here. Just give me 1 second. Okay, we're good to go. So talking about myself, I have completed my engineering in electronics and communication and have been awarded grade A by Cambridge English USL and have also been awarded competent leader by Toastmasters International. अच्छा, तो बच्चे लोगों, you can join us, you can connect with us on the Telegram channel. तो अगर आप लोगों को क्लास नोट्स चाहिए या फिर आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, होमवर्क चाहिए, तो you can join my Telegram channel. The link of the channel, it is provided to you in the description box. And of course you can join the official channel of Unacademy ICSE boards. तो ये जो official channel है, ये join करने से ना आपको क्या होगा, you will be staying updated about all the things which are going here at Unacademy. तो जो भी ongoing offers चल रहा है, जो भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें चल रही है Unacademy पे, you can stay updated just by joining this official channel. Okay, तो the link of both these channels, they have been provided to you in the description box. ओके तो चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास. तो आज की क्लास जो है, इट इज फॉर द 10th grade learners of ICSE board. Hi Naksh, hello, how are you? So today we are going to study about chemical bond. तो थोड़ा सा चैप्टर को जान लेते हैं, पहचान कर लेते हैं चैप्टर से कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी completed a certain part of it. I'm very fine, thank you so much. So this particular chapter, that is chemical bonding, it consists of several parts, okay, and if I talk about the whole thing in this chapter, तो ये सिर्फ bonding के बारे में है chapter. तो इसमें we are going to learn about 3 type of bondings: ionic, covalent and coordinate. Okay, तो ये 3 टाइप की जो बॉन्डिंग है, इसी में ये पूरा चैप्टर है. एंड दिस चैप्टर it gives detailed information about each type of bonds, how are they formed, what are the examples, what are the things, etc etc. हैकर, जय हिंद, हाउ आर यू? तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, बस ये ही चीजें हैं पूरे चैप्टर में. ओके, and we already completed this ionic bond to a certain extent. If you have missed that, you can see it in the playlist. आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड टुडे एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कोवेलेंट बॉन्डिंग. ओके, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी पर हमारा फोकस रहेगा. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास का वीडियो है, आई एम सॉरी, पीडीएफ है, यू कैन गेट दिस पीडीएफ आफ्टर दिस क्लास इन द कम्युनिटी. अभी कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी हर एक एजुकेटर का ना एक ग्रुप है. ओके, तो वो आपको ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा Unacademy लर्नर ऐप. ओके, सो द मोमेंट यू ज्वाइन द Unacademy लर्नर ऐप, उसमें आप देख सकते हैं कम्युनिटी ऑफ वेरियस एजुकेटर्स एंड यू कैन ज्वाइन दैट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द कोवेलेंट बॉन्ड. So I would really appreciate if you all guys help me with this. कि हम लोग ना I would ask some of the definitions and if you know, please let me know. चलिए, तो बताइए क्या होता है covalent bond, या फिर if you have studied about anything about this covalent bond, could you please help me out with this? What is the meaning of covalent bond, or whatever you know about covalent bond? Anyone? हाँ जी, anyone knowing anything about covalent bond? चलो, let me help you out with it.
तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जैसे कि आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा था दैट जो बॉन्डिंग होती है इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और उन दोनों के बीच जो होती है बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है. करेक्ट, बॉन्ड फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से. If I give you a proper definition, so what is it? It is a bond formed by mutual sharing. अभी mutual sharing मतलब क्या होता है? Can anybody please tell me? Mutual sharing of electrons by the combining atoms. Okay, so here this word mutual sharing is very important. Why? Because coordinate में ना sharing तो होती है लेकिन mutual sharing नहीं होती है. तो यहाँ पर this is the word which differentiates the covalent bond with the coordinate bond. Mutual मतलब let's suppose एक atom जो है it is providing with one electron, तो दूसरा भी it will be giving one electron to that particular atom. Okay, तो mutual sharing basically it means कि दोनों तरफ से equal number of electrons are shared. Okay, so this is known as covalent bond. इस bond से जो compounds बनते हैं they of course are known as covalent compounds, and this bond it is also known as molecular bond. Okay, so this is the basic definition of covalent bond that you should be knowing. And also do not get confused between molecular bond and covalent bond because it is one and the same thing. Okay, अभी covalent molecule क्या होगा? जो molecule a covalent bonding show करेगा that will be a covalent molecule. Okay, अभी how the bonding is taking place, let's take one example and then we will be moving forward. चलो, तो अच्छा एक एग्जाम्पल से पहले हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के जो एलिमेंट्स है दे आर शोइंग दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग. ओके, नाउ वी स्टार्टेड इन आयोनिक बॉन्ड की जो आयोनिक बॉन्ड होता है इट इज फेवर्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. मतलब कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है इट इज द आयोनिक बॉन्ड. ओके, विच फेवर्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली. लेकिन यहाँ क्या होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली नॉन मेटल्स कम इनटू द पिक्चर. अभी नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर दे हैविंग इन देयर आउटरमोस्ट शेल? नॉन मेटल्स के पास होंगे या तो 5 या 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. ओके, फर्स्ट चीज तो ये हो गई. सेकेंड चीज है देयर आर अगेन टू एक्सेप्शंस ओवर हियर. तो फर्स्ट वन तो है हमारा हाइड्रोजन. Hydrogen, it has got one electron in valence shell, and next is carbon. Carbon के पास है 4 electron in its valence shell. Okay, अभी क्या होता है, if I talk about the non-metals के outermost shell में since they are having 5, 6 और 7 electrons, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, okay, giving the electron it becomes very 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 difficult. Why? Because of energy. Okay, तो of course इतने सारे electrons को देना it is really not possible. Okay, so instead of giving their electron they go for mutual sharing of electron. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो इधर दे गेन द इलेक्ट्रॉन या फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे. Why? Because इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी कॉन्सिडरेशन. ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर कि जब भी कोई नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, ओके, एंड व्हाई आर दे कंबाइनिंग? टू अचीव स्टेबिलिटी. So the type of bond that is formed, it is known as covalent bond. Ankesh, explain again. Sure.
ओके, सो आई वाज टेलिंग अंकेश कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में दे आर हैविंग ईदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभी इनके लिए जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन. ओके, बहुत सारी एनर्जी लग जाती है ना. तो अगर इनको बॉन्ड फॉर्म करना है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन. ओके, अदरवाइज व्हाट दे विल डू, दे विल गो फॉर म्यूचुअल शेयरिंग. ओके, तो अगर किसी नॉन मेटल का बॉन्ड नॉन मेटल से बनेगा, ओके, ऑफ कोर्स टू अचीव द स्टेबिलिटी दे विल फेवर कोवेलेंट बॉन्डिंग. ओके, व्हाई? बिकॉज इन द कोवेलेंट बॉन्ड दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, उन्हें कुछ भी डोनेट करना नहीं पड़ रहा है. ओके, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टू नॉन मेटल्स एंड देयर बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. वेलकम. सो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? इट इज कंबाइंड, इट इज द मॉलिक्यूल विच इज कंबाइनिंग द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना. तो हाइड्रोजन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है. अभी यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी डोनेट या गेन तो होगा नहीं, तो दे विल बी गोइंग फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी कैसे हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना. अब देखो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. हाइड्रोजन और हीलियम के केस में इट इज द ड्यूप्लेट. तो हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इट रिक्वायर्स बेसिकली 1 मोर इलेक्ट्रॉन, है ना. तो हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन इट विल बी टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन, ओके, एंड दिस क्लोरीन इट विल अगेन टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. तो दोनों ने जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया. ओके, एंड दिस इज द बॉन्ड फॉर्म. सो हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक सम व्हाट दिस. क्लोरीन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ ले लेता है. एंड व्हाट आर दीज कंपाउंड्स नोन एज? दीज आर this is something that we are going to study later in this chapter. जो भी polar, non-polar, covalent bonding होती है, we are going to study about that also. Okay? तो या तो ये different elements के बीच में bonding हो सकती है, और it might be possible कि ये जो bonding है it goes with same molecules or I would say same atoms also. Okay? तो same atom की अगर हम बात करें, if I talk about let's suppose chlorine molecule. तो what is chlorine molecule? It is Cl2. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन. तो यहां बॉन्डिंग कैसे होगी, लेट अस सी. सो फर्स्ट क्लोरीन इट इज हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electrons. And then we are having second chlorine again which is having 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electrons, है ना. तो दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को 1 मोर चाहिए in order to complete their octet. And what are they going to do? They are going to take 1 electron from each chlorine. तो इसने ले लिया 1 electron from this one and this chlorine it has taken 1 electron from this one. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ, again we had the single bond and it is somewhat like this. Okay, तो ये हो गया chlorine molecule. So that proves that the covalent bonding is possible between different elements and it is also possible between the atoms of same element. Okay, so I hope that up till here everything is clear. If there is something that you might have not understood, please let me know.
ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स है ना, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू बेसिकली टू टाइप्स। एक होता है ऑन द टाइप ऑफ देयर बॉन्ड, ओके, या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, whatever it is, and second is on the basis of their polarity, that is polar है या फिर non polar है, okay. So we are going to study about each of the categorization one by one. All right, so types of covalent bonds. The very first one is a single covalent. Acha, what do we mean by single covalent bond? Any idea, anyone? Hanji, what do we mean by single covalent bond? Okay, let me tell you. See, right now we discussed कि covalent compounds कैसे form होंगे by mutual sharing of electrons. मतलब कि जो दोनों हमारे atoms है वो अपने अपने electrons share करेंगे and this is how covalent bonding will be formed. Okay, अभी क्या possible है जो electron share हो रहे हैं, okay, it can be either one electron is being shared, that is one pair, or maybe two pair, or maybe three pair. Okay, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड इट इज सिंगल, डबल और ट्रिपल और व्हाटएवर. ओके, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देयर इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग शेयर्ड. वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द एटम्स. एंड हाउ डू वी represent it? It is represented by a single line. Okay, we are representing this this covalent bond by a single line. Okay, so I hope that this is clear to you. चलो अभी देखते हैं single covalent bond बनता कैसे. Let's take the example of water molecule. Okay, अभी water की अगर हम लोग बात करें तो it contains oxygen and hydrogen. Oxygen के outermost shell में we are having 6 electrons. So this is oxygen having 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. And hydrogen, it has got one electron in the outermost shell. So this is how we can show hydrogen. है ना? अभी क्या होगा, hydrogen, as I told you, it requires only one more electron. तो ये क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है इट विल टेक फ्रॉम ऑक्सीजन एंड सिमिलरली दिस हाइड्रोजन विल बी टेकिंग इट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन. ओके, तो हाइड्रोजन का तो काम खत्म हो गया, इट हैज टेकन द इलेक्ट्रॉन, इट हैज अचीव स्टेबिलिटी, है ना. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, इट हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. Now it requires 2 more for achieving the stability. तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया है and one electron it is given to this hydrogen, right? So just a second, yeah, so one electron it is given to this particular hydrogen, another electron it is given to this hydrogen. Okay, तो ये क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन से it will be taking its electrons. Okay, so again it will be, that is how it will go for mutual sharing, right? तो ये one electron दोनों हाइड्रोजन से ले लिया and this is how the bond is formed. Okay, and how will the diagram be looking like? It will be looking like this. तो ये हमारा है water molecule. Correct. Similarly, let's take the case of ammonia. Ammonia, what is it represented as? It is represented by NH3. Now let us try to see how this molecule is formed. तो if I talk about ammonia, ammonia यहाँ नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में we are having 5 electrons. So 1, 2, 3, 4 and 5 electrons. Okay, next is 3 hydrogen. तो तीनों hydrogen let us represent it like this. Okay, so hydrogen, what do they require? They require again one electron. So they will be taking one electron
from nitrogen. इन्होंने ले लिया 1 electron, and now nitrogen requires 3 more. So because it has given 1 electron to each of the hydrogen, it will be taking the electrons from hydrogen in this way. और यहाँ पर क्या हुआ, ये bonding बन गई. It has gone for a single covalent bond. Okay, and see there are 2 electrons which have not participated in the bonding, ये वाले. तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, we call them as lone pair of electrons. Okay, so this is how single bond is formed. I hope that single bonding is very much clear to you. We'll be taking one more example and then we'll be moving on to the double bond. So last example that we are going to take for single bond is methane. So what is methane? It is represented as CH4, 1 carbon and 4 hydrogen. Okay, तो यहाँ कार्बन के पास, okay, just a minute. यहाँ कार्बन के पास it is having 1, 2, 3 and 4 outermost electrons. है ना? अभी कार्बन को क्या चाहिए कि 4 more electrons चाहिए, so it will bond with 4 hydrogen atoms. कैसे bonding हो रही है? Let us see. 1 hydrogen here. So actually we can place it anywhere, but it is better to place in a way that gives more clarity. Okay, जितना अच्छे से your bonding will look like, it will be more better, right? So just go for the bonding in a way that gives or that makes it look more perfect and clear. Okay, so यहाँ पर we are having another hydrogen, third one and fourth one. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? See, first of all let's take the case of hydrogen only. तो हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से it will be taking 1 electron. And then what will happen? Carbon, since it has given 1 electron to each hydrogen, so it will be taking 1 electron from each hydrogen. और इस तरह से ये जो है bonding बन जाएगी. And how we can represent methane? It is represented as this. So this is the basic diagram for representing methane. Okay, तो I hope यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें clear हो गई है. If you haven't understood this thing, please let me know in the chat box. I'll explain it again. But I guess anyway it's very easy to understand. अच्छा, now before moving further, let me tell you about the special classes students. तो special classes क्या है ना? These are the free classes on the on the app. Okay, तो उसके लिए आपको join करना पड़ेगा Unacademy Learner app. You can download it from the Play Store or App Store, and you can log in with your grade, board, whatever, and then you can start learning. Okay, you can begin your journey of learning. So you can learn from your favorite educators for free of course. You can engage via educators with your educators via polls. So the polls क्या है? These are the multiple choice questions. Okay, and you can answer the questions by selecting the correct option, and also you can clear your doubts in live special classes. Okay, तो अगर आपको कोई doubt है, you can go for asking. We are also having the chat box, so you can convey your thoughts to your educators. So if you want to visit the special classes, you can visit the links which are provided to you in the description box. And then why to subscribe for Unacademy? So Unacademy subscription gives you many features, such as you can learn from the comfort of your house. Then you will be having unlimited access to all the courses. You'll be taught by top educators of India at one platform. After that, you'll be having regular doubt clearing session. Okay, time पर हमारे जो sessions होते हैं doubt clearance पर, answer writing पे, they basically give you an I would say idea of on how to perform, right? Then your syllabus is covered. You get all the study material in PDF format. You have this live test series, batch courses, etc. Okay, apart from this, you have daily practice section, weekly mock tests, live quizzes. So timely quizzes भी होते रहते हैं.
Okay, so how to go for it? You can pick up any subscription plan. आपको 3 month का लेना है, 12, 9, 24, 36, and what you can do is you can use my code RITIKACLIVE, and this code will be giving you extra 10% discount. Okay, and this is how you can go for it. Chalo. Now let's move on to the second category, which is double covalent bond. तो अभी हमने देखा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड. सो व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड? काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, आई एम सॉरी. या तो अभी डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, two pair of electrons are shared between the combining atoms. Okay, and how is it represented? It is represented by a double dash. Okay, तो double covalent bond में क्या होगा, जो भी atoms combine हो रहे हैं, ओके, सारे एटम्स में नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन मे बी एटलीस्ट वन जो है, वन एटम, वन पेयर ऑफ एटम, दे शुड बी हैविंग दिस डबल बॉन्ड बिटवीन देम. ओके, तो लेट अस सी हाउ इट गोज. ओके, डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं है कि सारे एटम्स के साथ इट विल बी हैविंग अ डबल बॉन्ड. लेट्स टेक द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ CO2. यहाँ पर क्या होगा, दिस, ओके, लेट अस see by doing it only. Carbon के पास it is having 4 electrons, 1, 2, 3, 4. बात करेंगे ऑक्सीजन की, so oxygen is having 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and again we are having another oxygen with 6 electrons. Okay, अभी क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन it requires 2 more electrons, तो ये ले लेगा इस कार्बन से. Then this oxygen also it requires 2 more electrons, so it will be taking from this particular atom. Okay, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, the oxygen, both the oxygen, since they have taken 2 electrons, so they will be giving also. Okay, so यहाँ पर the carbon requires 4 more electrons, so it will be taking 2 from this oxygen and it will be taking 2 from this oxygen. Okay, so my diagram is a bit scattered wide, but yeah, you can just place the elements a bit closer. तो यहाँ पर ये जो bonding है वो किस तरह से show होगी, it is shown by a double bond. Okay, तो why a double bond? Because इस कार्बन ने, just a second, yes, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया, मतलब कि इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 electrons, 2 pair of electrons are shared, and same with this carbon and oxygen, and that is why it is being showed by a double bond. Okay, so I hope that you might have got it. So as I told you कि in double bond it is not necessary कि सारे ही atoms के साथ एक जो है bond वो double bond हो. It is necessary that at least one pair should be having this double bond. Okay, so let us see how that happens. Let's take another example. All right. So next example that we can take is C2H4. Okay, and let us try to see how is the diagram formed or how is the structure. Carbon, it has got how many electrons? It has got 1, 2, 3 and 4. Again we are having another carbon with 1, 2, 3 and 4 electrons. Okay, so यहाँ तक I hope the thing is clear. Then we are having 4 hydrogen. So 4 hydrogen could be placed somewhat like this. ये हमारे hydrogens है which are having 1 electron in their outermost shell. Okay, now let us see how is the bonding. अभी क्या हो रहा है ना, सी हाइड्रोजन को पहले हम लोग क्लियर करेंगे. तो हाइड्रोजन इट हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स 1, सो इट विल बी टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन.
Okay, so this is the first thing which will happen. अभी देखो ये वाला जो कार्बन है that is carbon number 1. Okay, let us consider this carbon first. तो इसे कितना चाहिए? It requires 8 electrons, है ना? 4 इसके पास already है, so it will be taking 2 from these 2 hydrogen and then 2 more are required, so it will be taking from another carbon. तो ये किस तरह से bonding form करेगा? कुछ इस तरह से. Okay, so this first carbon has got its octet complete and same will happen with the second carbon and this is how the bond will be formed. अभी इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से शो करेंगे हम लोग? Now see, hydrogen they have hello Nena, how are you? So we are studying about the covalent bonding and right now we are going with double covalent bond. Okay, तो यहाँ hydrogen and carbon they have shared one electron, so of course they will be shown by a single dash. अब बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन ने क्या किया है? They have shared 2 pair of electron, तो 2 pair की वजह से it will be a double bond which will be shown. Okay, so as I told you, double bond में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही elements के साथ एक double bond form हो. It is just that at least one pair of element should be having a double bond between them. Okay, so this is how a double bond can be shown. Okay, next category is a triple bond. So what is a triple bond? In triple bond, at least one pair should be having 3 pair of electrons shared. Okay, so 3 pair of electrons are shared between the combining atoms. Sorry. And how is it shown? It is showed by a triple dash. Okay, let us see how is it formed and what are the examples. तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही simple example लेंगे N2, that is a nitrogen molecule. Okay, so how is this formed? Nitrogen की अगर हम लोग बात करें तो it has got 5 electrons in the outermost shell. Okay, so N2 means 2 nitrogen atoms. So this is the first and this is the second. And how is the bonding going to be? So ये nitrogen it requires 3 more of course for an octet to be complete. So it will be taking 3 electrons from this nitrogen and same this nitrogen will be taking 3 electrons from this nitrogen. And the bond that will be formed is a triple bond, that is 3 pairs, that is to convey, that is to tell that 3 pair of electron have been shared over here. Okay, so I hope that up till here it is clear, and also it is not necessary that it is formed between same elements, it could be formed between different elements also. So example लेंगे हम लोग C2H2. What is this H2? Okay, what is this compound known as? It is known as ethyne from the family alkyne, जो कि हम लोग organic compounds में पढ़ने वाले हैं. Okay, अभी C2H2 की अगर हम बात करें तो what is the case over here? Carbon, there are 2 carbons, so we are having 1, 2, 3 and 4, and another carbon again we can represent it at this way. So why I am arranging the electrons this way, so that you know, we can show it in a bit of clear manner that how our electrons being shared. तो ये हो गया हमारा carbon, hydrogen, and how are the bondings going to be? So this hydrogen it is going to take 1 electron from the carbon. Again this hydrogen is going to take 1 electron. तो 1 pair का sharing यहाँ दोनों hydrogen के साथ हो गया. But talking about the carbon, okay, the octet is still not complete. तो यहाँ क्या करेगा? It will be taking 1 electron from here, and next 3 electrons it will be taking from another carbon. And same will happen with this carbon, so it will be taking 1 from hydrogen and 3 from another carbon, and this will lead to formation of the bond which we can show it
in this way. यहाँ एक bond and यहाँ 3 bond. Okay, so this is how we go for showing the bonding which is formed between ethyne. Okay, so I hope that this thing is very much clear to you. If you have not understood any single thing, students, you can please let me know, you can ask me. Okay, अब बात करेंगे of a very important term which is covalency. अभी covalency क्या होता है ना, like we have studied about electrovalency, उसी तरह से होती है covalency. So what is it? It is equal to the number of electrons taking part in the formation of a covalent bond. Okay, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज द कोवेलेंसी. जैसे कि हाइड्रोजन कितना अपना जो है एटम देता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंसी, इट इज 1. सो द कोवेलेंसी इज 1. टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन क्या है, इट हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. अभी इसको 3 और चाहिए, तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग. तो कोवेलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया. Carbon, it has got 4 electrons, it requires 4 more, so it will be its covalency will be 4 and so on. Okay, तो चलिए यहाँ तक I suppose that things are clear. Now moving on to the next very important topic, which is the condition for formation of a covalent bond. So let us see what conditions are required for, or what conditions favor the formation of covalent bond. Okay, so the very first thing is that जो हमारे atoms है उनके पास they should be having either 4 or more electrons. Okay, of course here exceptions are there, as chemistry is the study of exceptions. तो exception जो है हमारा first and foremost है hydrogen, then beryllium, boron, aluminium and some of the more are exceptions, but normally जो है we see 4 or maybe more electrons. Okay, next है उनका जो electronegativity है उसका जो difference है should be either negligible or 0. Okay, why? Because अगर electronegativity का difference ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, जिसका electronegativity value ज़्यादा है it will take the shared pair of electron with itself. Okay, और वो covalent ना हो करके electrovalent का property है, right? Next is they should be having high electronegativity. तो यहाँ बेसिकली हर चीज हर वैल्यू हाई चाहिए हमें, है ना. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. Okay, so this is what are the conditions. These are what the conditions for formation of the covalent bond. Okay, तो चलिए let's quickly revise what are the things that we have studied in our today's class. We began with the study of covalent bond. क्या होता है covalent bond? It is formed by mutual sharing of electrons by the atoms. Okay, it is also known as molecular bond, and it is generally formed between the non-metals which are having 5, 6 and 7 electrons in their valence shell. Exceptions are of course there, carbon, hydrogen, aluminium, etc, etc. Okay, अभी the bond they are basically of 3 types, single, double and triple. Single क्या होता है, जिसके बीच में there is only one pair of electrons being shared. Okay, it is represented by a single dash which is given over here. Okay,
For example, if I talk about the examples of single covalent bond, it is H2O or maybe CH4. तो यहाँ क्या हो रहा है ना, सारे जो है bonds they are sharing a single pair of electron, and this is why it is known as single covalent bond. Then we learned about double. तो double में क्या होता है, at least two combining atoms के बीच में two pair of electrons का sharing necessary है. Okay, for example, carbon dioxide or C2H4, that is ethene. Okay, again it is the hydrocarbon. Okay, तो यहाँ देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच में there is one double bond which is there, which leads to the formation of this compound. And triple bond में at least two of the combining atoms they should be having three pair of electrons being shared between them. The very common example is nitrogen or ethyne. और covalency क्या होता है? It is the number of electrons which take part in formation of a covalent bond. Next we learned about the conditions. So condition है कि they normally should be having 4 or more electrons. Exceptions are there of course. Electronegativity difference बहुत कम होना चाहिए, and value जो है electron affinity, ionization energy and electronegativity सभी की high होनी चाहिए. Okay, तो students, this was our session for covalent bond. अभी इसमें बहुत सारा कुछ बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं. एंड यू नो यू कैन स्टे अपडेटेड बाय जॉइनिंग माय टेलीग्राम चैनल. तो जब भी सेशन होगा यू जस्ट गेट एन अपडेट. ऑल्सो यू कैन जॉइन माय कम्युनिटी. तो यू नो whenever I post any update, you just get the information. You can get the sessions notes, practice material, and also you can share your feedback directly to the educators via poll. So if you want to join my community, you are most welcome, and you can click on the link which is provided in the description box. Okay, next is bugs bounty. So basically this is the opportunity for all the learners. If you see any inappropriate content in the video, you can you know raise that issue, and you can claim your prize. There is this form provided in the description box which you can use to report that thing. Okay, so I hope that you might have understood every single thing. If you haven't still subscribed to the channel, kindly go subscribe and like and share the video. So let's meet in the next class. Till then, बच्चे लोगों, keep studying, keep learning, keep enjoying, and wait for the next class. Thank you everyone.